So you guys are in second year, and then I remember when I came to second year, people are mostly confused about which books to buy, and they generally don't buy it. I hope so that you guys have not bought it, because this video won't be that useful to you then. I hope I said it right. So here there are always three categories of people, not the topper, average and below average kind. In second year I'll classify the people in three kinds, like the guys who are studying from the first day of school, college school, and then who start after like थोड़ा सा honeymoon phase रहता है. So people are, और SMBT है तो people go for like घूमने के लिए जाते हैं now. Then they are going to start after a few months, like 2 to 3 months. So okay, and then the people who actually start just before exams, a few weeks before exams. So three kind of people. So almost, and then just now I realized that I have books, 3 books for almost every subject except pharmacology, because it's pharmacology. So first we are going to start with pathology, a favorite, one of the most interesting subject if you are able to understand it. So first book that I'm going to show you is Pathology by Robbins, and जो भी है Robbins. So this book actually is like the guidance for pathology, but it has a good language and it is readable. But continuously read करेंगे तो नींद तो आनी ही चाहिए. So this book requires dedication. अगर आपने ये बुक रखी है तो शुरू से पढ़ना है, यही बुक पढ़ना है और कोई बुक नहीं पढ़ना है. एंड इसमें से नोट्स बनानी पड़ेंगी. यू कांट बी लाइक वन डे यू केम जस्ट वन डे बिफोर, एक दिन बिफोर एग्ज़ाम के एक दिन पहले लेके आते हैं. आई विल स्टडी पैथोलॉजी फ्रॉम रॉबिन्स. नो, यू आर अ गॉनर, लिटरल गॉनर. So this is Pathology Volume 1. I have never taken the courage to take Volume 2 after whatever happened. This. Now then comes Hirschmore. This is the most popular book for pathology in second year, and most of you guys might also have bought it. It has a simple language but needs to be studied. It needs to be studied. और एग्ज़ाम के पहले भी पढ़ सकते हैं इसको, लाइक कुछ लोग पढ़ते हैं. आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट. मैंने ट्राई किया था एंड मैंने बुक रख दी थी एंड आई गॉट टू द शेल के बुक डिपो एंड बॉट दिस रामदास नायक, माय रिकमेंडेशन, एन एग्जाम सेवर. This is actually a pretty nice book with very nice diagrams. Almost all are from Robbins. It is a summary, like it's not like the क्या बोलते हैं इसको, गार्डन की क्या थी, VD जोशी. It's not like VD जोशी. It is question answer type, but better than read. like जो आप summary निकालोगे अपना ये पढ़ के रॉबिन्स, वो उसमें ऑलरेडी दिया है. and it is quite a nice book to read, colorful, nice diagrams. but ये diagrams आप जर्नल में नहीं बना सकते. एग्जाम में बनाना तो कुछ भी बनाओ. एग्जाम में एक डॉट और HNE से कुछ भी बना दिया तो इस पे 1 मार्क मिल जाता है. just remember this, okay? if you are not getting any answer, then just draw HNE diagram and you will give half marks at least. I hope so, if the people are like want to pass you. So next comes which, like microbiology or pharmacology. Let's do pharmacology. It has only 2 books. I have only 2 books. It has 3 books also. This is the most famous book, K.D. Tripathi for pharmacology. And then this, actually the cover is torn, I'm sorry about that. This is the Shanbag. So Shanbag is actually Sambulingam for K.D. त्रिपाठी. अगर आप इसको सिंगुलर पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर इसमें शायद से मार्क्स मिल जाए. इसको पढ़ोगे उसमें कुछ समझ भी नहीं आएगा, बट इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा फिर समझ में आएगा. लाइक यू हैव टू रीड इट 2 to 3 times. द लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट. बट देन देयर इज अ बुक कॉल्ड शर्मा एंड शर्मा, whose language is, I heard it is pretty good.
and you guys can check it out from the library. उसमें अच्छे से explanation अच्छे दिए हैं, उसमें classification अच्छा दिया है. If you want to do classification, you can do from you should do from KD Tripathi. It is pretty easy than the rest of the things. And then Shanbag तो है ही, तो you can if you are going to study from the first day, then I actually recommend both the books. क्योंकि आप first you can read the topic from the Shanbag and get an idea what the points are, and then go for KD Tripathi. और फिर उससे जो भी नोट्स बनाने आपको बनाइए. हाँ, notes, second year is all about notes. If you can, then should. Then comes microbiology. It has 3 books. I have 3 books. Generally, people only know 2 books. So first is Anand Narayan. If you have bought it, well and good. Please study from this from the first day, because this is very dry. I don't like this book. I bought this book and kept it for a very long time without opening it. And then there is student favorite Paveja. इसमें स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज है. शॉर्ट में भी दिया है कुछ जो जिसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं, उसमें शॉर्ट में दिया है. एंड डायग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं. सो Paveja is student favorite book, and if you want to buy, then you can buy. Well and good. And then there is my favorite book, this Essentials of Medical Microbiology by Apurva Shastri. So this book is actually used by our microbiology staff in SBT, and if someone else is watching this video other than SBT students, तो ये भी book है भाई, अच्छी book है. It has colorful diagrams, so you don't have to buy the Paveja microbiology, practical biomicrobiology. इसमें almost सारे fix है. But हाँ, there is a book called Practical Microbiology of Paveja that at least one guy should have in each room. So ये एग्जाम के टाइम पे मिलती नहीं है, and it is pretty important. वो बाद में देखेंगे. So this book has not the question answer format. It has a summary format, and it is given very nicely. And it is pretty detailed and easy language. So this can be studied even one day before examination. But one day before examination के लिए Paveja recommended है. And if you want a bit detail or point to point कि मतलब when you are studying viruses or bacteria, then there are points. Morphology का point आता है, उसका पैथोलॉजिक पैथोजेनिक्स का पॉइंट रहता है, उसके लैब डायग्नोसिस का पॉइंट आता है. सो यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस इज. और वैसे मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि खरीदो यही बुक. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ बाय इट, और जस्ट गो थ्रू दिस वंस. एंड Paveja वैसे भी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो यू कैन, इफ़ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन बाइंग बुक्स, जस्ट गेट थ्रू द लाइब्रेरी. अभी अटेंडेंस की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. हम लोग एक्चुअली में 1 महीना लेट आया था, सो यू नो. देन देयर कम्स फॉरेंसिक मेडिसिन. नेवर ever buy this book. This is the worst kind of nightmare. 20 मार्क के लिए ये बुक पढ़नी पड़ती है. This अभी एग्जाम के 1 दिन पहले, because nobody actually is that into FMT. But if you are interested, then don't buy this book. This would be like for the people who are going for MD. वो भी तब MD में जाओगे तब जाके समझ में आएगी इसमें क्या लिखा है. But the student favorite is Bardale, and I've just got it from a friend and try to read from it, because it is a pretty readable book. Like diagrams, मतलब इसमें सब कुछ फोटोज में दिया है. एवरीबडी लाइक्स फोटोज, पर जैसे हम लोग एक 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड क्रॉस करते फोटोज का
रेशो कम होते जाता है बुक में और टेक्स्ट ज़्यादा होते जाता है. बट फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए बेस्ट बुक है और इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टफ कम्स. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉरेंसिक मेडिसिन, like if you're studying forensic medicine 2 to 3 weeks before the exam, then it's okay. But one day before exam, please भाई इतनी मोटी बुक नहीं होती है. इतनी मोटी बुक तो तुमने फार्मेक के लिए भी नहीं पढ़ने वाले हो, नहीं माइक्रो के लिए पढ़ने वाले हो. दिस इज द एग्जाम सेवर एस के सिंगल, एस के एनी केस एस सिंगल. सो दिस इज अ बुक. इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया है और इसमें बैक साइड में सारे IPCs भी हैं. So IPC anyways you should keep this book handy because IPCs are like viva के questions mostly आता है. So you can buy this book. ठीक है.